So here is the example pertaining to the nesting control structures. For example, according to the list of test results, 1 for pass, 2 for fail. We are in the process of having the results grading scheme, isn't it? As a student as well. तो रिजल्ट्स का सीजन है, तो जितना उससे रिलेटेड एग्जांपल दूंगी आपको समझ आएंगी, ठीक है? बस जा रहे वाले, अभी दोबारा आने वाले हैं मिड टर्म्स, ठीक है? नहीं वैसी बात नहीं, अभी चलें, अभी पता लग जाएगा कि हमने फाइंड करना है कि वेदर द क्लास इज हार्ड वर्किंग और नॉट, ठीक है जी? सो लेट्स सी। ओके जी, अगर आपके पास लिस्ट ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स हैं, 1 फॉर, बड़ी लास्ट में बातें ना करें, kindly concentrate, 1 for pass, 2 for fail, and you have 10 or 50 students to process. Write a program that will analyze if the class is hardworking, and the scenario for hardworking class is 80%. If 80% of the class is passed, it means it's a hardworking class. So how you are going to proceed with this problem? कितने काउंटर होंगे? क्या लूप लगेगी? Would you deploy a loop? काउंटर कंट्रोल लूप है और सेंटिनल कंट्रोल्ड है. The number of students are already known to us, so exactly the same. Counter is less than equal to 10, so it's a counter control loop. So you have a counter which is counting the number of students. Any further counters you require? Yes, so we require 2 more counters. Further, the program will process 10 results, fixed number, so we'll use this loop, counter control. 2 counters will be utilized, 1 count for pass, the other count for fail. Each result will be tested. If it is not 1, we will assume it is at 2. So ये हमने conditions में deploy करनी है. Again, analyze the results. Top level problem statement. You have refined it, initialize variables, input the grades, count the respective counters, print the summary. So this initialized variables become passes 0, fails 0, student counter to 1. Now input 10 grades. This will become, while student counter is less than or equal to 10, input the next exam result, check whether it's exactly equal to 1 or not. If it is 1, add 1 to the passes, else 1 to the other counter. And at the end, as you have processed a student result, add 1 to the student counter. This is very important because while loop is ticking upon this counter. If you are not incrementing it, you are not making this counter converge towards 10. You are in infinite loop. So you have to make that 1 becomes 2, 3, 4 in every loop iteration, and ultimately 10, and then 11. It will ultimately break the loop. इसको अगर आप कन्वर्ट कर लें, एंड पे तो जस्ट समरी आपने डिस्प्ले करनी है इससे की. Passes counters to 0, failures to 0, student counter to 1. Integer result, the input, the grade, just like over here. So while student counter should not be 0 because we haven't gone through the student counter. No, it's fine. We are going up to 10. We can go from 0 to 9. We can go from 1 to 10. It is not something we are computing average. It is not involved in any computation. It is just counting. It could go from 90 to 100, isn't it? Because number of iterations are 10. वो आप जिस तरह भी करें. It is not involved in any computation, so we have initialized it with 1. It is not a total variable or the counter used in a previous calculation upon which we have made the check whether it's 0 or not. Over here we have started it. So enter the results. Enter 1 for pass, 2 for fail. See in the result. Inside the loop. First student, counter value is 1. Get the result. Make decision upon this result. If the result is exactly equal to 1, line number 26 states, if the result is exactly equal to 1, add 1 to the, else add 1 to the. Now a student has been processed,
add 1 to the student counter. It will become 2. Again go back, because while ends over here, go back to the condition with the updated value of the student counter, which is 2. 2 is less than or equal to 10. True or false? True. Seen. Result status of next student. Get the status, decide upon the counters, this or that, add to the respective student counter. So the second student has been processed. Now the student counter value is 3. We are talking about the third student. So keep on iterating till the time counter reaches student number 10. Get the input, the last student, increment the respective counter, increment the student counter, it becomes 11. 11 is less than or equal to 10. False. So you will come out of it. Just display the respective counters. Line number 38 and 39. Display the counters and put a check on this counter only. If passes is greater than 8, see out. Simple. So इसकी अगर आप आउटपुट देखें, seen 1 for pass, no more marks, no more average computation, just the overall result of the class. 1, 2, 2, 1, 1, 1. 6. Nothing is printed because the result is not 80%. इस क्लास का देख लेते हैं. ठीक है, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. ठीक है, 9 ऑर्डर के क्लास. ठीक है. So another example of counter control looping with some different scenario. It's a bit easier one, isn't it? सबको समझ आ गई? Yes, sir. It's fine. अब नेक्स्ट हम एक सिनारियो क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन प्रॉम्प्टेड. ओके, वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली नेक्स्ट इज स्विच सिलेक्शन स्ट्रक्चर. And here is your problem statement. Now no more integers, characters. Your grades are characters. Letter grades are alphabets, isn't it? So we have to read those grades from the user and ultimately we have to display the number of each grade entered. इस क्लास में कितने अल्फा हैं, कितने बीटा हैं, कितने सी हैं, कितने डी हैं. ठीक है, वो मैं देख चुका हूँ आपका. ठीक है, I already know each one of you with all the CGP and Fs and everything. तो सेकंड सेमेस्टर एंड ऑनवर्ड सब लोग रेडी हो जाएं. सब लोग नहीं, सॉरी, जितने लोगों का GPA 2 से क्लोजर है, क्योंकि 2 below 2 in first semester it's a warning. In second semester if your CGPA is below 2 it means first prob and probation has something associated with that. तो वो फिर आप पूछ सकते हैं अपने सीनियर हज़रात से, तो फिर उनकी काउंसलिंग हो रही होती है, ये इधर कॉल उधर कॉल, डेफरमेंट्स और वो सब चीज़ें. तो इसलिए जो स्टूडेंट स्मूथ सेलिंग होते हैं वो दे नेवर कम इन द रेडार, इजंट इट? वो इस तरह पास आउट भी हो जाते हैं. मगर जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो समझते हैं, वो अभी से अपने तमाम सब्जेक्ट्स पे फोकस करें और अपने CGPA को जस्ट मेंटेन इट वेल अबव 2.00. ये आपने इंश्योर करना है तमाम स्टूडेंट्स ने कि एटलीस्ट फॉर स्मूथ सेलिंग इन द डिग्री प्रोग्राम थ्रू आउट द 8 सेमेस्टर्स योर CGPA शुड बी अबव 2. बस दैट्स इट. इफ यू आर गुड, नो इश्यूज. Then go for Chancellor medal, President medal. ठीक है? You can look for these things. Okay, coming back to the point, हम साथ साथ थोड़े रूल्स वगैरह डिस्कस करते रहेंगे. ठीक है ना? तो इसका हमें सोल्यूशन बता दें बस, तो हम आज की क्लास खत्म करते हैं. स्विच सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमने यूज करना है. इवन नॉट स्विच, वन वे टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज कि जिस तरह अब आपको मैं समझाना चाहता हूं, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली मूव टू द आउटपुट. वी वांट समथिंग ऑफ दिस नेचर. ये क्लास है, एंटर द लेटर ग्रेड्स. हैव यू टोल्ड द यूजर टू एंटर कैपिटल ए और स्मॉल ए? So whatever user has entered, capital or small, it should be counted towards
अल्फा इंक्रीमेंट. दोनों का and Capital A or small a, both are counted towards alpha. Likewise, B or C or D or any. So just to keep it simple, unlike the NUS grading system, the grades available to us are A, B, C, D, and F. E is invalid, incorrect. So enter the letter grades or enter -1 to end the correct input. ये सेंटिनल वैल्यू ही है. हमने इसको किससे रिप्लेस कर दिया? EOF is a formal sentinel with this control Z or D depending upon your operating system. Normally control Z. Let's see. So do you want to make this heading repeat time and time again after the input of every grade? इस चीज का भी हमने ख्याल रखना. तो ये जो आउटपुट है, accordingly with respect to this output, our program design states that this thing should not be inside loop, isn't it? अगर ये लूप के अंदर होगा तो बार बार आपको प्रिंट होगा, which is not of course likely कि आपको हर ग्रेड की एंट्री के बाद डिस्प्ले हो रहा है, enter the letter grade, enter this. It should be displayed once. So one thing is decided, prompting should be done before starting any looping structure. Sir, how do we know which is the EOF grade? Do we program it ourselves? As a user, इसलिए आपको कहा था कि आपने -1 for the normal layman user, it's fine. As a programmer. As a programmer, it's control Z or D. It's defined. It depends upon your operating system. कोई कंडीशन में नहीं लिखना. एंड ऑफ फाइल करेक्टर, अभी आपके सामने इनपुट आ रही है, इधर ही आ रहा है कंट्रोल Z. जस्ट वेट अ मिनट. A, B, C यूजर एंटर कर रहे हैं वैलिड ग्रेड्स. अगेन वी हैव टू पुट अ चेक अपॉन वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी. कीप ऑन एंटरिंग द ग्रेड टिल द टाइम ग्रेड इज नॉट इक्वल टू EOF. So we are getting the grades. E प्रेस कर दिया. Is it a valid grade? No. ये हमारी स्कीम में नहीं है. Incorrect grade. Enter a new grade. यूजर ने प्रेस किया D, A, B, कंट्रोल Z. इनपुट स्टॉप. ये है वो कंट्रोल Z जो आपको डिस्प्ले भी होगा. इनपुट विल स्टॉप. एंड व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट? डिस्प्ले द ईच ग्रेड्स. अल्फा, बीटा, C, D एंड F. लूप से बाहर आ गई. ऑफ कोर्स लूप की कंडीशन लगी हुई है. जब -1 करते हैं आप लूप से बाहर आ जाते हैं या नहीं, ये बताएं. इधर भी आ जाते लूप से बाहर. और ये आपके लेटर ग्रेड्स अकॉर्डिंगली डिस्प्ले हो सकते हैं, तमाम लेटर ग्रेड्स. नाउ वी हैव टू इंप्लीमेंट दिस थिंग यूजिंग अ स्विच स्ट्रक्चर. स्विच इज एक्चुअली अ सिमुलेशन ऑफ इफ एल्स. पहले हमें ये चीज समझने की जरूरत है. इसको पहले सिंपली समझेंगे ग्राफिकल फॉर्मेट में, सिंपल एग्जांपल के साथ. विल स्टार्ट फ्रॉम केस ए. केस इज द कीवर्ड. इफ केस A is true, perform A related actions. If B is true, perform B related actions. Again, the example of an ATM. If you have pressed a button to withdraw the money, it will open the code how to withdraw the money. It could be 100 lines of code. And once you are done, it will take you, it will break. Break is the statement which will take you out of the immediate structure. Immediately out of that structure. तो ब्रेक आपको आउटसाइड दैट स्ट्रक्चर ले आएगी. तो आपने 1 प्रेस किया, A प्रेस किया, A रिलेटेड एक्शंस परफॉर्म हुए, ब्रेक विल टेक यू आउट ऑफ द स्ट्रक्चर. A प्रेस नहीं किया था, B किया, B रिलेटेड एक्शंस आउट ऑफ द स्ट्रक्चर. कोई इनमें से प्रेस नहीं किया, डिफॉल्ट एक्शंस. दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. एग्जांपल से वी विल डेफिनेटली कोरिलेट इट बेटर. हियर इज द एग्जांपल. Choice. If you normally hear such menus, we don't hear such menus, but in this format, isn't it? Press 1 for this, 2 for this, 3 for this. We have already quoted that in order to implement such scenarios, we will prefer switch. तो ये आपके सामने scenarios हैं. See out display हो गया. You have your input in which variable? This is the decision making variable. Put it in that switch structure. This is the part of syntax. Switch is the keyword. Choice input आएगा या input. Choice is your input.
out of these 4 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली इनपुट मांग लेगा स्विच वाली स्टेटमेंट या हमने उसको बताना होगा ऑटोमेटिकली, या आपने कुछ डिस्प्ले किया या आपने इनपुट दी और आपने खुद से इनपुट स्विच में एम्बेड की। ये चेक करने के लिए अब एक फर्दर यहाँ से स्टार्ट हो गया। केस इज अगेन अ कीवर्ड। फर्स्ट केस 1, इफ चॉइस वैल्यू एट दिस वन इज आर मैचिंग, यूजर हैज प्रेस्ड 1, so are they equivalent or not? Colon, part of syntax. So उससे related code press 1 for good choice को डिस्प्ले होगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्विच स्ट्रक्चर है, तो हमने जस्ट सिंपल इसको रखा है कि जैसे ही 1 प्रेस करें उससे रिलेटेड एक्शन परफॉर्म होगा एंड देन वी विल कम अक्रॉस अ ब्रेक स्टेटमेंट। व्हाट दिस स्टेटमेंट विल डू, it will take you out of the switch structure, just like if else. There are multiple if else. आपके मार्क्स है 92, क्या नेक्स्ट if else चेक होता है? A ग्रेड अवार्ड हो गया, क्या नेक्स्ट इमीडिएट F चेक होगा? जब else लगा देंगे, हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था, isn't it? तो else क्या करता है? टेक यू आउट ऑफ द स्ट्रक्चर। सो स्विच एक्चुअली सिमुलेट्स नेस्टेड if else। ये बिल्कुल उसी तरह ही काम कर रहे हैं। सॉरी, it is part of the syntax. It's your own value. If user has pressed this value or this value or this value, this case keyword is part of syntax. And after that, we have to put the values. What could be the possible values in this variable? Can we change it into? Yes, we can change it. We can change it into characters. We can change it into grades. Whether user has pressed alpha or beta or anything else. तो अभी तो हम इंटीजर के साथ ये चीज समझना चाह रहे हैं कि करेक्टर केस 1, if this is the user has pressed, good choice, break, take you out of the structure. If not 1, 2 related actions out of the structure, 3 4 out of the structure। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिखाई है, अब इसका आप सिंटैक्स देख लें, क्योंकि आप एट टाइम्स discussing example before the actual syntax actually helps you understand the syntax. Switch upon a variable if the case is value 1 means both are matching. Execute its statements and have a break. Taken if variable is exactly equal to value 1. At times you go to an ATM, there are 2 buttons. Press this button or that button. एक ही related actions perform होंगे. It might be the case, isn't it? Press this button or that button, it will lead to, for example, say money withdrawal. So how to implement that scenario or scenario, this or this, within switch case value 2 value 3। अगर आप इसको इस तरह लिख देंगे इस सिंटैक्स में, this actually means whether user has pressed 2 or 3, value 2 or 3, in both the cases, in either of the cases, these set of statement will be written. User has pressed capital A or small a, increment A count। बात समझ रहे हैं? ये हमने इसलिए यहाँ और के केस में कैपिटल A स्मॉल a equal to a plus 1 and then we wait। Sir, what if we don't want break? वो फिर नेक्स्ट पे आप कंटिन्यू करेंगे। वो फिर इसलिए जरूरी है कि we don't want next statements to be checked, next cases to be checked. If user hasn't pressed any of these values, default will be catching. No values are invalid value. Enter it again, something like that. Again after default we have a break. हमने वेरिएबल को वैल्यू 1 को वेरिएबल कब डिफाइन किया? लेकिन वो उसमें जस्ट सिंटेक्स के पार्ट में वो चीज़ बताना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली इंटीजर पार्ट है, इसलिए मैंने आपको उसकी एग्जांपल दिखाई थी। इट एक्चुअली रन्स लाइक दिस, इसलिए नाउ इट्स क्लियर, इट्स एन इंटीजर, चॉइस इज एन इंटीजर, इजंट इट? विद यूजिंग स्विच एंड वाइल वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट प्रोग्राम कि जिसमें आपने तमाम ग्रेड्स लेने हैं यूजर से, जितने इनपुट से, जितने आपके ग्रेड्स हैं। इफ एल्स में भी तो इस तरह ही था नेस्टेड में। एग्जॉस्ट तो नहीं हो गए आज आप लोग? हो गए?
Okay ji. So let's have some entertainment session.